नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में वी विल डिस्कस मेजर हेडलाइंस ऑफ द हिंदू। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड से द पास्ट इज इन योर हेड एंड द फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट कंपनसेशन ऑन COP27 एजेंडा, इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 1 और ये रिलेटेड है पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से। In this article, we have to know about agenda of COP27. तो दोस्तों, recently negotiators agreed to discuss the creation of an international mechanism for compensating poor countries that suffer large-scale damage due to climate disasters. Our next important headline is Indian black honeybee is a Western Ghats discovery. It is available on page number 5. और ये रिलेटेड है पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट इंडियन ब्लैक हनी बी। तो दोस्तों, इट हैज बीन डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट्स and it produces higher quantities of honey which is thicker in consistency. And what's the significance? It opens up new avenues for increasing honey production. Our next important headline is the continuing stalemate in Myanmar. It is available on page number 7 और ये related है paper 2 international relations से। In this article we have to know what led to the military coup in Myanmar, consequences, international dimensions, impact on India and conclusion and way forward. तो दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा इसको हमारी वेबसाइट पे भी बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हैं। लिंक यू नो कि कहाँ मिलेगा, ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 8 और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, what were the different arguments, what has the Supreme Court said about the UCC, and what has Law Commission said, and what is the government stance. तो दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को हमारी वेबसाइट पे भी कवर किया गया है और यहाँ पे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज द Falcon heavy launch, the most powerful operational rocket in the world. It is available on page number 9 और ये रिलेटेड है पेपर 3 स्पेस सेक्शन से। In this article, we have to know specifications of Falcon heavy rocket and what its current mission. तो दोस्तों, recently SpaceX launched the Falcon heavy rocket into a geosynchronous Earth orbit, and this is considered as national security space launch for US military. Our next important headline is bring back old pension scheme, government employees to write cabinet secretary. It is available on page number 10 और ये related है paper 2 social justice से। In this article we have to know about old pension scheme and why there is a demand to restore the old pension scheme. तो दोस्तों, in old pension scheme, upon retirement, employees receive 50% of their last drawn basic pay plus dearness allowance or their average earning in the last 10 months of service, whichever is more advantageous to them. Our next important headline is online gaming fraud, ED pursuing China link. It is available on page number 10 और ये related है paper 2 polity and governance से। In this article we have to know about the online gaming and its regulation in India and existing issues and way ahead. तो दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग को हमारी वेबसाइट पे बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। लिंक यू नो कि कहाँ मिलेगा, उसके अलावा आप यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। Our next important headline is camera traps new hope for snow leopard in Kashmir. It is available on page number 12 और ये related है पेपर 3 species news से। In this article we have to know about snow leopard. तो दोस्तों, इसको हमारी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। Our next and last important headline is Anthropological Survey of India builds tribal hut replicas to help preserve, promote unique heritage. It is available on page number 12 और ये रिलेटेड है पेपर 1 सोसाइटी से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इट्स रीसेंट इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो दोस्तों, रिसेंटली एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज recreated the herds of several communities at its different regional centers to showcase the heritage of tribal communities, especially those of particularly vulnerable tribal groups. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on various social media platforms.